dear students, welcome back in today's mathematics class. Student, in our previous video we have completed our chapter 5, that is lines and angles, which was very important topic, and you will see student the sum of the properties from it we will be using in our new chapter. So students, the basics questions which we are doing that will be using throughout in your mathematics. That is why I used to say जो भी important और basic चीजें हैं please learn it and keep it in your mind forever. Okay, so today we are going to start our new chapter, chapter number 6, and the name is triangle and its properties. And as you know the triangle, what is triangle? Everyone knows a closed figure having 3 sides, 3 angles and 3 vertices, right? So today we will be doing two exercises 6.1 and 6.2, which is very simple, but it becomes simple when we learn about the concepts, right students? So before starting the exercise question, what we used to do? Introduction about the exercise question. So let's quickly start our introduction part. Student, as you know triangle, what is triangle? Triangle having 3 sides, yes, A, B, C. Okay, so if I make in such a manner, this is also a triangle A, B, C. Type of triangle you can make, okay, all called triangle only having 3 sides, 3 angles, angles A, B, C, and vertices, जो point student, these, the corners, we call vertex or vertices, right student? So this is all about triangle. But before starting the properties, let's talk about few more parts about the triangle. So second topic of triangle, which is very important. So the term is median. Student, what is median? When in a triangle, a line segment joining a vertex of a triangle with the midpoint of opposite side. I know you are not getting this definition. This we will understand with the help of this diagram. In a triangle, when we made a line segment from a vertex of a triangle, किसी भी vertex से, so this is vertex, this is vertex, this is vertex. जब हम किसी भी vertex से एक line segment draw करते हैं, कहाँ? To the opposite side of the triangle. See, with the midpoint of the opposite side, मतलब उसके midpoint पे होना चाहिए. So see, if I draw this is line segment, this is D. So this is the midpoint. एक line segment draw from the vertex which is the midpoint of the opposite side of the triangle, that is B and C are the opposite side. You can't draw the median from A vertex only. You can draw from B as well. See, this is triangle A, B, C. This is a vertex B. So A, C ka midpoint. So we are making this median. Got? So likewise you have to make it from C also you can make. Fine student, what is median? When we are making a line segment joining to the opposite side of the triangle, but in the middle, that is called median. Got student? Now coming to third topic, altitude. Altitude, a line segment joining a vertex of a triangle with the opposite side in such that it would be in a perpendicular way, like A, B, C. इसमें भी वही बात है, vertex से हमने एक line draw की, fine student, with the opposite side of the triangle. So it make a perpendicular. ये हमने word use किया perpendicular. You know this is a sign of perpendicular only. This is perpendicular. Perpendicular means 90-degree angle. No? Perpendicular means at the angle of 90 degrees to the opposite side. As you can see student, you will say that what is the difference between the median and this altitude? What is the difference? इसका भी आपने वही किया, वर्टेक्स से आपने लाइन ड्रॉ की ऑन द ऑपोजिट साइड. यहाँ पे भी आपने ऐसे ही किया, वर्टेक्स से आपने ड्रॉ की ऑन द ए पॉइंट से नहीं, ऐसे ही आप बी पॉइंट से भी यू कैन ड्रॉ. लाइक सी, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी. सो फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट साइड पे दिस इज मेकिंग अ 90 डिग्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिफरेंस इज दिस ओनली स्टूडेंट. ये मीडियन क्या है? मिड पॉइंट है.
मतलब इस लेंथ का BC का मतलब BD इज इक्वल टू BC, फाइन। बट जो ये एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इक्वल है नहीं है डजंट मैटर। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। सी स्टूडेंट, सी दिस, this is also a triangle, this is a triangle, three side, so I am giving name A, B, C. See if I am drawing from A vertex this is making 90 degree, but is this a median also? Median क्या होता है? Mid point, opposite side का mid point, and as you can see this, if their name is BD, BD is this much length, or you can say 1 centimeter, BC is this much length, are they equal? No, they are not equal. So ये क्या है? Altitude, not median. Median क्या होता है? Mid point. और BC का mid point कहाँ होगा? Somewhere here. So जब हम A से mid point draw करेंगे यहाँ पर, so this is a median and this is a altitude. Got student what is difference between median and altitude? Median is mid point. Now अगर ये BE point दे दे, now BE is equal to EC, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मतलब इधर का हाफ इधर भी हाफ, दे बोथ आर इक्वल, बट एल्टीट्यूड इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल. Got student the difference between both? It's very simple. So this is your second and third topic of triangle, which is very important. Now coming to our next introduction part of the chapter. Student, next topic is types of triangle. Student, you know types of triangle? Although we have many types of triangle, okay, on the basis of angle, on the basis of side, but here I am discussing only those types of triangle which we will do in the exercise, means which help in our exercise question. Okay, so very first is equilateral triangle. The very first is equilateral triangle. As the name suggests, student, equilateral triangle. So equi means equal, which have equal side and equal angle. जैसे a triangle is there, ठीक है, इसमें सारी साइड इक्वल होंगी. If it is 3 centimeter, that will be also 3 centimeter. The third side will also be 3 centimeter. BC, AB and AC all are equal. AB is equal to BC equal to CA. Got student? This is called equilateral triangle. The next type is isosceles triangle. Isosceles, ISO, isosceles triangle. Isosceles triangle in which two sides are equal and the third side is unequal. And isosceles में student opposite side जो है वो mostly equal होती है. Means this is a triangle, suppose ये 2 centimeter का होगा, this will be the 4 centimeter student. So the second one side also will be of 3 centimeter. Fine. वैसे तो आइसोलेस मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल होती है. व्हाई आई हैव मेड टू लाइंस मींस इट इज अनइक्वल. these two sides are equal, okay, and basically opposite side जो है वो इक्वल होती है. Got student? Isosceles in which two sides are equal. Got student? Types of triangle. Okay, now the next topic is exterior or interior angle property of a triangle. ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? ट्रायंगल. सो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी करने से पहले एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर मींस बाहर, इंटीरियर मींस अंदर. एज वी हैव इन चैप्टर नंबर 5, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. यस, सो ट्रायंगल में भी ऐसे ही होता है. एक्सटीरियर मतलब जैसे ट्रायंगल है, किसी भी साइड पे फल एक्सटेंडेड, से एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, राइट? सपोज दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, 2 एंड 3. ठीक है, ये बाहर एंगल आपका सपोज 4 है, एंगल 4. जरूरी नहीं इसी साइड से एक्सटेंड होगा. यू कैन एक्सटेंड इन फ्रॉम एनी वर्टेक्स. आई कैन एक्सटेंड फ्रॉम बी आल्सो लाइक दिस. सॉरी, दिस वन लाइन आई कैन एक्सटेंड फ्रॉम हियर आल्सो, ए बी सी. सो हमेशा जो ट्रायंगल के
बाहर होगा, दैट वुड बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी स्टूडेंट, विच वी विल बी डूइंग इन आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन, कि जो भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी, एंगल 4 इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द एंगल। ऑपोजिट क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3, सॉरी एंगल 2। एंगल 4 के ऑपोजिट कौन है, ये साइड एंगल, ये एंगल ऑपोजिट है। एंगल 3 ऑपोजिट नहीं है, तो बिल्कुल उसके साथ में है, linearly they are, it is making but not opposite. Likewise here, if I write here angle 4, यहाँ पे angle 1, angle 2, angle 3, so this angle 4 is equals to opposite side इसकी ये angle 1 plus angle 2. Got student what is exterior angle property? Very simple. The exterior angle is equals to the sum of the opposite of the angle of its angle. So opposite, fine. So when we'll do the equation, it becomes very easy. Directly we'll use this property and we'll get the answer. Okay. Now exterior तो हो गया, done. Now interior. What is interior? Inside. So in a triangle, as you know student, triangle के अंदर के सम कितने होते हैं एंगल्स के, 180 degree. We already done in our class 6 also, we used to say also, right? So this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3. So angle sum property of a triangle, all the angle sum in its interior one is equals to 180 degree. अंदर के एंगल का सम 180 होता है, that's it. और बाहर का एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा, उनके का सम किसका सम होगा, वो ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल के सम का इक्वल होगा। Right student, when we do the equation, you see how easily the questions are being using. क्योंकि जो property based question होते हैं ना बेटा, they are very simple. बस हमें property use करनी है, quickly we will get the answer. I hope you understood all the introduction part. Now let's start the exercise questions. Now students, start with exercise 6.1. Question number 1 we have, in triangle PQR, D is the midpoint of QR. D is a midpoint. Okay. So A part is PM is. Where is P? P. PM is, as you can see, it's 90 degrees. So PM, जो 90 degree का angle from with the opposite side of a triangle is called altitude. So PM is altitude and PD or we say D is a midpoint. तो जो भी अगर midpoint है, so it is a, yes, median of the triangle. Got student? Now third part is QM is equals to MR. QM, as you can see from here only, and you know this PM is a altitude. So is it they are equal? No. QM is not equal to MR. Why? Because D is the midpoint of QR. तो QD equal होगा DR के, not QM is equals to MR. Right student? So this is all about question number 1. Again I told basic clear है कि question are very simple. Okay? Now coming to question number 2. Again very simple. Draw a figure. We have to draw. Condition is being given to you. जो condition given है उसके according you have to draw the sketch. ठीक है? A part in triangle ABC. So first of all you have to draw one triangle. A part. One triangle. The name is ABC. BE is a median. BE. It means BE बोला है तो vertex कौन सा लोगे आप? B. BE is a median. So AC का midpoint. So you will draw this and this point will be E. So BE is a midpoint. That's it student. अगर आप ऐसे लिखते ABC तो B यहाँ से मतलब आपको median draw करना है from B vertex. Right? Now coming to B part. In triangle PQR, QR and PR are altitude of a triangle. PR, ध्यान से देखो बेटा, QR और PR are the
एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जो ये आर और आर है ये कॉमन है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का बनना चाहिए, नो स्टूडेंट। सो सी, इफ आई ड्रॉ दिस और ये पॉइंट इफ आई टेक आर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए। सो दिस आई विल टेक अ स्ट्रेट, बिकॉज आर पे क्या है 90 डिग्री का, बिकॉज ऑल्टीट्यूड मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एंड दो आर्म्स कौन से दिए मैंने आपको, क्यू, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। इसे पी ले लो, इसे क्यू ले लो, डजंट मैटर, बट एंगल का बन रहा है पी आर। सो पी क्यू एंड पी आर, ये क्या है एल्टीट्यूड। सो ज्वाइन इट, बिकॉज ट्राइंगल का बोला है। सो इट मीन्स कौन सा ट्राइंगल बनाओगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल। गॉट स्टूडेंट। सो कंडीशन को ध्यान से देखना, दैट्स इट, द क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। उसने बोला है जो क्यू आर और पी आर है ये एक ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है, मतलब उसमें 90 डिग्री का बनना चाहिए एक एंगल। 90 डिग्री तभी बनेगा अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। गॉट स्टूडेंट। और पॉइंट भी सिर्फ 3 है, यहाँ पे तो 4 पॉइंट्स थे, पी क्यू आर, और एल्टीट्यूड आपने एम लिया था, पर यहाँ पे एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर बन रहा है। फाइन स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सी पार्ट, इन एक्स वाई जेड ट्राइंगल YL is the altitude, x y z YL, अब L जो है अलग पॉइंट, जैसे x y z लो तो ये YL जो होगा एल्टीट्यूड होगा। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। हमने अभी तक जो एल्टीट्यूड या मीडियम बनाया है कहाँ बनाया स्टूडेंट, इनसाइड, बट उसने बोला एल्टीट्यूड तो होगा बट आउटसाइड होना चाहिए ट्राइंगल के, अंदर नहीं। सो हाउ विल मेक, लेट्स सी। This is a triangle student. Now naming देखो, YL should be altitude, तो X, Y and Z. Fine. Now YL should be a altitude in the exterior side. So see student, if I draw this, if I extend this, draw from here. So this is altitude of a triangle, और triangle के बाहर है outside. गॉट स्टूडेंट। तो ये आपको यूज करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ट्राइंगल का ही एल्टीट्यूड बनाना है बट आउटसाइड। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल, यस स्केल एंड ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं। फाइन, तो ट्राइंगल बनाया एंड देन वी हैव मेड वन एल्टीट्यूड आउटसाइड ऑफ इट। गॉट स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल बट you need to see only what the condition, that's it. Okay, now coming to our question number 3. See question number 3, verify by drawing the diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. It can be same student, yes or no? See isosceles बोला है, सबसे पहले you know isosceles triangle में दो sides opposite side equal होती हैं, no? See A B C, मतलब AB is equal to AC, है ना? AB is equal to AC. फाइन। और अगर ये दो लेंथ सेम है, अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड मीडियम ड्रॉ करूं, सो दिस विल बी D, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। एंड स्टूडेंट इनकी जो BD है, दिस विल ऑल्सो बी DC. BD is also equal to DC. क्यों? Because you can see, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इक्वल मेजर का आइसोलेस ट्रायंगल बनाओगे, मतलब अगर जो लेंथ आपने यहाँ ली विद द हेल्प ऑफ रूलर, सपोज इट इज 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेकर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ओके, देन आप फिर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना, देन यू मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल कि जितनी लेंथ BD है उतनी ही लेंथ DC होगी। Okay, so what you will write, yes in isolate it can be same, so you will draw it also by your own, at ABC, then altitude AD, so yes ABD is equal to DC, that you will see also. Okay student, how you will solve it, you will make it with the help of ruler by on the isosceles triangle, the method I told you, but you will make it. Okay, so नीचे simply लिख देना ABD is equal to DC. आइसोलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी वही है और मीडियन भी वही है, इक्वल पॉइंट, इक्वल लेंथ, राइट स्टूडेंट? सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट कमिंग टू एक्सरसाइज 6.2,
Only one question we have in 6.2 and it had total 6 parts. First, second, third, 3 only I have drawn over here and 3 parts are homework for you, that is 4th, 5th and 6th. 4th, 5th and 6th part. These 3 parts are homework for you. Right student? Very simple question. Just have a look. First part we have in a triangle, you have to find out the value of x, which is interior of the angle. Okay, you have to find out the value of x simply. We have done such type of equation, no? But it is in a triangle form. So see students, as you can see, it is a triangle, one angle in the exterior side. So here we can use exterior angle property. What is exterior angle? Exterior angle is equals to sum of two opposite interior angle. And always, like we have done in properties, you have to mention the property always. Okay? Although in the bracket or pehle likho, it is your choice only. So exterior angle we have 115 degree is equals to sum of opposite. This is opposite 50 degree plus x. Fine. Now x value we don't know student, and this type of equation we have done in chapter 3 simple equation, right? X value we don't know, so x will remain here only. The 50 degree will go that side and change its sign. Plus का है तो minus का. So 5 minus 0 5, 11 minus 5 6, and then x. So x value is 65 degree. Very simple. बाकी चीजें as normal which we used to do. The thing is we use the property exterior angle one. Right? Now second part, we have a triangle and again 100 degree, see outside of a triangle and inside opposite sides are these. So write down as 100 degree is equals to 70 degree plus x. How? Exterior angle property. This you have to mention every time student. Don't forget, I am telling you, it carries marks also in exam. Right? So x value would be student, 100 would be here, 70 will shift that side. So 100 minus 70, 30 degree. So x value would be 30 degree. Very simple. Now coming to third part. Again the same type of equation. Exterior angle is given and opposite angle is given. Now see student, this is angle nahi likha hai, but you know which angle it is? 90 degree. No, it is a right angle triangle, right? So write down 125 degree is equals to x plus 90 degree. Why? Because of exterior angle property. So write down 125 minus 90, x value we don't know. So 5. So 3. 12 minus 9, 3 is equals to x. So x value is 35 degree. Very simple student. As you can see, equations are just simple. Using the property we are finding the value of x. Okay. So in such a way all three parts are there. This will be homework for you. You will do by your own. Now this is all about today's topic, today's class. In next class we will be doing further exercise of this chapter. And as you can see, questions are very simple. Need to be, yes, learn the basics. Okay student. So till then, thank you so much. Do your work very nicely. If you feel any difficulty, you can ask your subject teacher also. Okay. So thank you so much. Bye bye students.